when I asked him on what happened this morning, and he said कि भैया पिछले कई दिनों से ना गुड़गांव में फ्लाइट नहीं आ रही है, and from 2 to 4 in the night usually there is no electricity, and obviously I could see the sleeplessness on his face. So if even in this simple case, if we do not know which side of the bed a human being has got up, how can we advise and get into a conversation with any human being without actually listening to any human being? So I thought, instead of operating from a 30,000 above the sea level approach of saying that you attend my 4-hour program and your brain will be rewired. If you attend the 2 hours program, your business will become 10x. From that genre, let us listen to people on this Chai Pe Charcha and see if we can understand and maybe answer a few questions, which is practically possible in a 45-minute, 50-minute conversation. So who would like to go first? What I would do is I'm dropping a link in the chat box. This is available for everyone. Audience, am I audible? If any one of you can drop a message in the chat box, if I am audible. Utkarsh is able to listen to me, but if the audience is able to listen to me. Yes. Thank you, Sanjay, for confirming. So I'm dropping a link in the chat box. And Utkarsh, if you can announce everyone, this link is primarily for you to write an open text on what would you like to ask. And by the time people are asking and writing their questions, Utkarsh, all the questions that you have received on your social media form and yes, the post for which we ran a sponsored ad, and those of you who will be able to listen to me live right now on various social media platforms post this session also. Which way you would like to go first? You want to ask those questions first, or the audience who is live right now? I think before just to start off, let me ask a couple of questions so that participants also it's a warm-up. Yeah, it's a warm up. They will play some try balls, and once the chai kick they get, they will feel a little energetic also. Then they can start throwing up their question. Lovely. So the first question is I have received from Mr. Vikas. He is asking for how to automate the marketing activities. Okay. So before I talk about marketing automation or any automation, my take on this is that there is a need for us to, before we actually reach to an autopilot mode for anything, it is important that if there is an activity which is repetitive in nature, if there is an activity that needs to be done regularly, let's say if you're doing email marketing and you have already understood who your target audience is, you have devised what all topics are there, you have understood what needs to be communicated, you know how to create eye-catching titles, you know how to build pitches around that. You have a content team and a writer who can curate the content for a particular target audience, for a particular industry, for a particular vertical, for a particular geography, for a particular language reader. If all these formalities are there for people who are MSME audience, I would say that depending on what part of the marketing that you are talking about in this question, you can use various softwares with the help of which you can automate. And the storehouse for getting updated on which is the new software which is coming in, you should go to a site called appsumo.com. Can you repeat the name of the app, sir? Appsumo.com. Okay. Appsumo. So what you can do is
this is a portal or a platform which is basically launching various apps, which might be, so whether it is productivity hacks, whether it is marketing automation, whether it is email automation, whether it is WhatsApp automation, whether it is your entire funnel management piece. There are various softwares which are there which can help you automate. I don't want to take much time because otherwise 45 minutes क्या पूरी life निकल जाएगी एक system को automate करने में. So I hope this one tip will help you navigate, and I assure you that while you will click on this link, you might get lost on that site completely. So utilize your time effectively. Only stick to what you are searching for. They have amazing packages, and the packages are that you can use that software for a certain time, the free time, and if you don't like it, you will be able to get the money back. Go through the packages. I don't want to market AppSumo right now, but I found extremely useful apps there. That's one small tip. But if you have to take advice for your vertical and your company, I would strongly say that you should book a call. You can drop your number in the chat box with us and fix up a call with me. I would like to understand what is your marketing strategy, help you write that marketing strategy, and then decide the automation part. But if you have already reached there, I think, and if you're already evolved, go onto that site and have fun. So I think one sip for Chai Pe Charcha today. That's right. Mr. Vikas, if you're there online, I hope you got your answers. The second question is from Mr. Rajveer Singh. He want to understand. I mean, this is a very vast subject. That he wants us to cover. He is wanting to understand about that how to generate leads. Okay, so let me take a deep breath and see that, seeing the paucity of time, what are the things that we need to be mindful of? Because again, this is a very, very case specific piece. I don't know what kind of business that this person does. Mm-hmm. So I may end up answering or giving a very generic answer. Sir, should we push all the participants who are there right now to the panelist side, so that since we will also be able to see the cups that they are holding in their hand, and then they can shoot. Yes. I would request my admin to please push everybody into let's do that. I think that's a great idea. All right, sir. Yes, sir. So before we even talk about lead generation or demand generation, I think there are some basic fundamentals that we need to be aware of. The first piece that we need to be aware of is that why do people actually buy any product or service? And fact of the matter is, whether people buy a printer or a government buys Rafale missile, or you buy a soap for yourself, or you buy a cooling tower, or you buy a cable tray, or you buy garden planter, or you buy solar panel, or you buy battery, or you buy truck, or you buy car, or you buy electric vehicle, whatever you are buying, people are usually buying for a few prominent reasons. I think people can debate. Either they are buying for either increasing their finance or basically saving some money. The second thing is that people are buying for growth and productivity. So when you take a fitness solution, Utkarsh, you want to improve your productivity. You want to look good. Okay. You want to stay fit. You want to increase your life in general. Or there might be a reason behind this reason also. So understanding that is very, very critical to be able to decide which way we will be able to generate leads. And two fundamental pieces that we need to be aware of
either a marketing campaign is driven by the thought that we will reach out to the customer, which is nothing but sponsored ads, where you are spending money to generate eyeballs or to get eyeballs. And second method is that you create an entry strategy with the help of which you are able to do something with the help of which people reach out to you. Yes or no? Yep. So let me give certain examples of, let's say there is a company which is selling, let's say, it's an art consulting firm. It's an American company called American. The name of the site is American Art Resources. And their entry strategy was that they created an educational seminar with the help of, and the name of the educational seminar was 5 Dangerous Trends Facing Hospitals. Now their target audience initially was hospitals, let's say North America. So they created educational seminars and people from hospitals came to them. So what I'm saying is create a piece, a hook. Some people call it lead magnet, some people call it hook, some people call it a entry strategy, a reason why people should reach out to you. Okay. And another method is that you spend money to get eyeballs, and there are various marketing campaigns. Now, this campaign, whichever campaign that you're using, would be to maybe gain attention, getting them into the funnel, getting them interested, creating a intent, want, or desire of the customer to become your customer, and ultimately have a call to action. A couple of days back, I was traveling from Nagpur to Delhi, and I posted a message that if you can guess the seat number of my flight, I will give you a free gift. Okay. And that was an invitation for inviting people for this Chai Pe Charcha. Okay. Now, there are some quick ones that people use where they create landing pages and invite you to a certain gateway. This path from start to end on why people buy, what are the fears and frustrations that your client has, which your competitors can't solve. And if you solve that and create a path, create a roadmap, then choosing the right lead generation mechanism would be easy. I'm not an advocate, Utkarsh, of creating a 3-step, 5-step, 6-step process for a lead generation, because that might work for a particular company and that might not work for another company. So I think to get into detail, I would say, what was the name of the person who was asking the question? Rajveer. Rajveer Singh. So what we can definitely do is, Rajveer, you can book a call, ask Utkarsh, let's have a one-on-one Chai Pe Charcha and understand if you are interested in getting your marketing strategy sorted out. So I can help. All right. Any other question? So can I request everyone to please switch on the video? Is there any particular reason why everyone has switched off the video? Is there a technical fault? No, we are not allowed to. Switch on. There is message coming. Okay. So you guys are getting a message that you are not allowed to switch on the video? Yes, yes. Not an issue. So unmute. By the time our backend team fixes, if there is any question that you have, you can unmute and ask your questions right now. Try now. Minutes. Who would like to ask? And now it is coming. Yeah. Vikas has raised the hand, so let Vikas be the person who would want to ask that question. Vikas, please go ahead. Thank you very much. Am I audible? Now I can hear you, Vikas. Please go ahead. Perfect. It's like, how do we get through the gatekeepers, those who are, to reach the right connect, like what we call about a man, a person who in authority, how to reach that guy by passing the, gatekeepers, because there are receptionists, there are personal assistant whom we have to get past through. Any ideas? A very, very interesting question. Before I answer that, what is the business, Vikas, you are in?
Mine is a mosaic tiles business. I'm into mosaic tiles for like your bathrooms and swimming pools. And where is this question emerging from? What are the challenges that you're facing? No, it's like high-end architects. Those who my clients are basically professionalists whom I approach. So landscape architects, leading architects, interior designers, top class, and then they're all very hi-fi, and then they don't have time. If you don't have the contact numbers, it's very difficult to reach out to them. There are so in my language that I speak, and in the sales magnet program that I conduct, this is covered in detail, but I will share with you 4 or 5 deficiencies why this happens. Okay, because number one is that there are a lot of people who are unable to reach the person who can give information, and they are stopped by the, as you rightly called the word, gatekeeper, very commonly used. Okay. Why does it happen? Because we have we need to build a skill to do fact finding. On one side is the theory, and on the other side is action. So assuming that you know who your target audience is, Vikas, then it is important to learn, first of all, how to find them. Whether you are using Google Extractor, whether you are using LinkedIn, whether you are using social media, but in certain businesses, the information might not be available in the public domain. So one is an assumption that it is available or it is not available. Second is finding out what would be the right method. So one challenge that people face, these are the deficiencies which leads to poor suspecting. Okay. The second is, a lot of people have this habit, or I would not use the word habit. A lot of people face this challenge because that they have developed poor probing skills for asking questions or establishing information. They don't know how to ask. I go in a meeting and I generally ask, what's your buying process? And people take ages to ask that question. Now, building that comfort obviously would require practice. Understanding who is who, understanding who's playing what role, understanding who are the stakeholders. Because in a high value sales situation, in comparison with transactional selling, there are many stakeholders which gets involved. The moment it is about marriage, the moment it is about a large event in a family, the moment it is about a high purchase decision in an organization, most of the time the person who has the highest authority to reduce his or her risk, he involves a buying committee. Okay, in any organization. Now he or she involves various stakeholders. So understanding and developing skills to ask that question from the right guy will help you reach the right person. Because there are times when we waste a lot of time in asking questions. Also, some basic common sense and intelligence is required. So let me ask you a question, Vikas. If you are selling, let's say, frozen matar, frozen peas, and I drop you, I close your eyes, drop you to, let's say, a Galleria market in Gurgaon, where will you go first? Your product is frozen pea, and I drop you in a new market which you have never seen before. It's called Galleria market in Gurgaon, and there are some 100 shops in that, let's say, market. Where will you go first? Of course, the vegetable shops or to the place where vegetables are being sold. One, you applied some thought and then answered that question. Yes or no? Yeah. I will go to a place where there is a deep freezer. Yes, of course. That adds to the second one. Yes, correct. Now the criteria for your salespeople to go where your target customer is where the key is. Are you getting my point? Yeah, yeah. Understanding what I'm saying? The third is, a lot of people who are selling have a lack of product or competitive knowledge. They have lesser knowledge about their own company, their own products and its applications, which might be useful for the customer. So when they open their mouth, in the initial few seconds, the other human being is looking for warmth and competence. The exchange of pleasantries and competence. If the initial part of the conversation does not give a clear picture that he is the right person to talk to, usually the safety trigger
of the customer works and they push you. Yes, no? And also this habit of imagining that everyone is your target customer is wrong. The fourth is lack of knowledge on applications and its benefit to the business of the prospect. We don't understand the client's business well. And unfortunately, if you do not know, yesterday I was talking to Vikas, somebody who's selling printers. Let's say that the cost of that high-end printer is 3 crores. And the seller was asking me a question कि 3 करोड़ 8 लाख रुपए का मैं बेचना चाहता हूँ और क्लाइंट कह रहा है 3 करोड़ में दे दो, और वो कह रहा है पिछले लास्ट के 2 ऑर्डर मेरे से लूज हुए हैं क्योंकि मैं पैसे का डिस्काउंट नहीं दे पाया. My God. So when I asked him a question that who's your customer, what was his last year's turnover, what are his future plans, what are his this year's plans, what is the order book of your client, why is he intending to not use the old machine but the new machine, why is he taking that decision, and if he takes this decision, what would be the benefit? Absolutely. Will he save 80 lakh rupees because of that? Then he will be ready to pay 8 lakh rupees to you. And I did a deep inquiry into this. So doing the deep inquiry will only happen if you are sure about your company, if you are sure about your product, if you are sure about your competition, and if you know about your customer and the application of your product or service. मैं अभी जब उत्कर्ष से बात शुरू कर रहा था चाय पे चर्चा पर, तो मैं कह रहा था हंसकर कि आज सुबह जिस ड्राइवर को मैं इतने सालों से जानता हूँ वो किस जगह, मतलब उसके बेचारे का आज मूड ऑफ होने का रीजन ये है कि उसके घर में लाइट नहीं आ रही. तो हम क्लाइंट को ये मान के क्यों चलते हैं जिससे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुअर जजमेंट in selecting organizations for suspecting is one core reason. And what are the solutions? Solutions are, I would say, practice how to fix on-the-spot appointments, learn how to create general benefit statements for people so that they can get hooked and allow you to get into conversations. Third, brush up your company and product knowledge. Fourth, develop knowledge and understanding of various applications of your client business. And last, increase knowledge and awareness of your own territory so that you can create an interest generating statement. So today, before our Chai Pe Charcha began, I was talking to a group of people who are based out of Pune. And the moment I started, I said, today, I'm going to provide you, उनको मुझे presentation देना था. मैंने कहा अगर आपने अच्छा presentation आज दिया, तो मैं आज आपको एक ऐसा tool दूंगा marketing का जिसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे. बट उसके लिए मेरे को आपसे ये चाहिए कि गिफ्ट ऑफ अटेंशन चाहिए. 1 आवर का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है और उसमें मैंने देखा कि एक एक आदमी कंट्रीब्यूट करने में लगा हुआ था, क्योंकि आपको हुक तो क्रिएट करना है ना अपनी कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि अगर आपको अटेंशन मिला ही नहीं तो आपका बाकी का पर्पस कैसे अचीव हो. एंड फॉर दैट practicing beforehand is where the key is. I'm sorry I gave a very elongated answer. I'm getting message from my team that you can only take like this, you will be able to take less questions. But I firmly believe that even if I take 7, 9, 10 questions, it is important that we try to change the word one conversation at a time. It's better to justify one question rather than in a 45-minute webinar doing 6x or 10x of somebody's business. That's not my value system. Can I, sir, add on a question if it is okay? Allow me to take other questions also, Sure. because if time permits, I'll come back to you. Sure. That would be unfair otherwise. Yes, Sanjay, you have raised your hand, so please go ahead. Yes, sir, how to decide the budget for exhibitions? How to decide the budget for exhibitions? Is there any thumb rule like this much percentage of your turnover, or how to decide whether how many exhibitions to participate? And so for setting up a marketing budget right now, instead of only talking about exhibitions, for setting up a marketing budget, first of all, there are 2-3 fundamental rules. One is, if the cost of acquiring a customer is 100 rupees, which is cost per lead and customer acquisition cost are the 2 metrics that we need to be mindful of. How do you calculate cost per lead? How do you calculate, Sanjay, cost per lead? Let's say if you run a Facebook campaign and you ran it for 5.
I'm sorry, Chintan. Can I have my conversation with Sanjay? Yes, I'll sir, come back to you. sir. So let's say you ran an ad of 500 rupees, Sanjay, and you got 10 leads. So what is your cost per lead? 50 rupees. 50. Yeah. And let's say from those leads, you got, let's say, one client which has given you, let's say, 500 rupees or 5,000 rupees. So these are the two metrics that you need to calculate to first decide which method of marketing you would like to do. Most of the companies do not have this basic metrics of calculating cost per lead and customer acquisition cost. Okay. Now, the advantage with industrial exhibitions at times, especially if you know that your target audience is coming there, is that you may get a chance to directly meet with your target customers. Yes, sure. So in certain cases, I also recommend during my consulting conversations with my clients that there are times when we take a call. So it might look expensive. Let's say आपने stall book किया 1 लाख रुपए में, आपने वहां डेवलप कराया 1 और लाख रुपए में, आपका 2 लाख रुपए का आपका स्टॉल बना. लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस वहां पर आ रही है, तो आपको ये कैलकुलेट और ये एक अंदाजा लगाना है सही तरीके से कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट एंगल, कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी आप 3 कारणों से करते हैं. पहला, रीजन नंबर 1, गैस करके बताइए. हम लीड जनरेट करने के लिए करते हैं. में रिलैक्स है. Can I I'm just putting Giri onto mute. I'm sorry, Giri ji. You are not mindful that we are having a conversation with other people also. I think by mistake you unmuted. Number 2, तो एक तो लीड जनरेशन कारण हो गया. दूसरा, आप अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए मार्केटिंग करते हैं. मतलब आप बात को बताने के लिए, वैल्यू जनरेट करने के लिए. और तीसरा, आप मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं जब आपको ऑफर देना है किसी. आज मान लीजिए मैं चाय पे चर्चा पे आपको बुलाया हूं वैल्यू क्रिएशन के लिए, और अंत में मान लीजिए मैं अपने प्रोडक्ट का आपको ऑफर दूं, है ना. तो मार्केटिंग किसी ना किसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. और स्पॉन्सर्ड एड चाय पे चर्चा का किस चीज पे चला था? फेसबुक पर. तो या तो लीड जनरेट करने के लिए किया गया, या लोगों के आंसर्स के थ्रू मैं ये जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आई कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, व्हिच इज माय प्रोडक्ट डेमो, एंड ऑफर इज वेयर यू आर helping people to actually make an offer. You are specializing on your skill. Now, depending on what your objective is, it is extremely important to list down all the activities and see which mode will work. If you would have attended the full sales mastery program, which you missed twice, I would strongly recommend that there are 7 musts of marketing that we speak about in that program. And then you can take an intelligent call. Number one, exhibition is the right choice for your business or not. If that is, then the budget creation process is very simple. Decide the list of activities and then decide the budget. Yeah, and we will be able to teach you that also on how to calculate that. Now, you also asked another part of the question: is there a thumb rule for a business? Yeah. Now, thumb rule, applying a thumb rule is basis what? Is basis some past track record. Now your situation and my situation might be completely different. The length of your pocket and width of your pocket might be different than mine. Yes, no? Yes. I may want to hold on to, let's say, my capacity to create branding might be different than yours. Right. Your life cycle of business and my life cycle of business would be different. Some companies build beautiful products, especially MSMEs. They build product with a name, but they don't build brand name. Are you with me? True. Yes. तो मैं कैसे ये बता दूं कि थंब रूल क्या है? और अगर बता भी दूंगा ना, कई लोग कहते हैं 7% होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला है, हम एडवाइजर है, इसलिए हम बता रहे हैं. मैं उनको उन्हीं के इंडस्ट्री के कम से कम 50 एग्जांपल दे दूंगा कि आपका ये थंब रूल गलत है. Why? Not because I want to prove my point. I just want to, I don't want to misguide people, because every word that I'm saying is getting recorded, and I need to be mindful of what might be the consequence of what I'm saying right now as a responsible coach. Yes. Thank you. Yeah. So I'm sorry,
Is there a thumb rule? The answer is no. Just to summarize, the second is whether exhibition is the right choice or new. First, arrive at the marketing strategy. Correct. Then see which mode will work best. Then see what would be the best and the most effective way as per cost per lead and customer acquisition cost, and then decide what will work best for, depending on what your objective is. So there are many preconditions before we answer that question. Yeah. I don't know whether Dharya raised his hand first or Ashish. Utkarsh, were you able to find out a sequence? My apologies for that. Sir, I was so lost in talking to Sanjay. Ashish sir has put in the question in the chat box Dharya, from would you long mind back. if I can take his question and then come to you? Sure, no problem. Thank you. I think since I am confused, let me ask these two people only. Ashish, please go ahead. This is Ashish. Please go ahead. Hello. Am I audible, sir? Yes, loud and clear. Please go ahead. Sir, I am a government electrical contractor. Right now, I am taking government tenders, but now I want to enter in a private industry. So, how can I reach a proper person or get a lead from private industry? You are an electrical contractor, if I hear Yes, you. sir. Yes, Huh? yes, sir. And who's your target audience? Right now, I am taking government tenders, sir. That I have understood. Yeah. Your intention, your future plan is to reach out to target private players. Industry. So give me an example of what industry are you targeting? Panel work, sir. Huh? Panel, control panel. Okay, fair. Electrical control Are you panel. talking about this is your product or this is your target audience? This is not my product. I am in service industry, sir. This Yeah. is my target. This is your target audience. Okay, Yes, so what do you need to do? Number one, I think there are fundamentally 6 steps. Ashish, Yes, sir. what I'm going to share is a logical framework, but not a rigid sequence. Okay. So Yes. number one, extreme clarity around who is your target audience, which is called suspect. Oh. Okay. Before deciding that I have now decided to get on to, let's say, from government to private, and you are changing your strategy, it is extremely important that you finalize that list. Second is, you need to be very clear about what would be your sales approach. How are you intending to get appointments from your target audience? What kind of marketing medium you are going to use? Now, then the third piece is, what is the method that you are going to use to present and propose your product or price or plan? Identification of who would be the decision maker in the target account is another critical activity that you need to be mindful of. Also, creating a storehouse for your demonstration capability, your proposals, your capability presentations, your capability decks, your electronic communication needs to be ready. And last but not the least, building entire funnel for your organization. Listening to how you can enter into that from strategy to execution will have many, many steps. I think if you would have asked a question which is very specific, you would have got a specific answer. But I think you have asked such an open-ended question that it is long to answer. But funnel is the key. 6 steps are there: suspecting, prospecting, ability to get appointments, sharpen your skill to negotiate on price, risk, time, and hassle, and ensuring that you provide value to your clients, closing, and ensuring that you build relationship with people who have got it from you. Whether you use best buyer strategy, whether you use referral strategy, whether you use partnerships, whether you use neighborhood strategy, what entry strategy that you're going to use needs to be finalized, and then you should go ahead. So, Ashish, that's my take on your question. Okay. Yeah, and if you want to really raise your awareness around it, I would strongly invite you that you come and join the full sequence of Sales Magnet program.
so that in 10 days, this question I can answer. I would need 20 hours of conversation with the group to be able to answer this question in a very step-by-step manner, rather than giving you an answer which is 30,000 above the sea level. It requires 20 hours to answer this question. Yeah. Daria, please go ahead. जैसा आपका नाम है वैसा आपने patience रखा, तो thank you very much. No, it's totally fine. So I have a question about customer engagement. So just to give you an idea, because I want to be as specific as I can. So we are into the business of chemicals and pharmaceutical raw materials, and our focus is of export. So most of my clients are not in India. So how could I develop a customer engagement method where my products are just raw materials, you know? So I'm not supplying any end products or not supplying it to any of the end users. We are just supplying, it's a pure B2B business, and I'm supplying raw materials to people who are manufacturing pharmaceutical products ahead. So how can I, make my customer engagement process in such a way that I could, regularly keep them attracted to me in a way that they continuously buy products from me and not from my competitors? You want to evolve strong relationship with your existing customers. Is that my understanding? Correct. So do you have a pen and paper? Yes. Write down 9 steps. Okay. Step number 1. And in case if I'm going fast, my request is you can stop me and then I'll answer. Okay. This might be a question which is there in the minds of many people. Yeah. Step number 1 is that you are talking about order to cash cycle. An organization is usually divided into 3 parts. The first is inquiry generation. The second is from contact to contract. And third is order to cash. Yes, no? Your question is falling in the third bucket. Are you with me? Order to cash. Yeah. Utkarsh, you will need to be mindful. There are some people who are unmuting and talking with somebody else. So I am very sensitive that there is a Daria who is very important for me right now. So Daria, let me come back to you. So sure. Important aspect is that once you get the order, build a process, Daria, that you visit the customer a couple of days after getting the order. Now, this could be a call. This could be a visit. This could be a video call. This could be simply a video. This could be an audio. This could be a podcast. This could be an email. This could be a message. This could be a WhatsApp. Ideally, if you ask me, if it is a high value relationship, some of you or one of you can actually go to a client who has already taken your order. Okay, and what's the objective of that meeting? It is to manage post-purchase feelings of the customer. Sorry, manage what? It is to manage post-purchase feelings of the customer. And most of the organizations don't do that. So as just like a feedback, probably. I am not using the word feedback, but otherwise it becomes a form. I'm very sensitive what I'm saying right now because I'm live. So listen to the questions carefully. This gives you an opportunity to thank the person in person. Yeah. And if possible, you can take support of colleagues with you who can do that activity and set up a system that all post-purchase feeling needs to be recorded. If there is an issue with the customer, he will voice out or she will voice out. Yes or no? That's step number 1. Number 2 is please ensure that you visit the customer again within stipulated days of first supply of your raw material to verify if there are no issues. You have a raw material and you can decide that you will fix up a stipulated number of days to visit after the order is placed. It may not be you, it may be a person who is doing that. And you can decide a calendar. कि मतलब मेरा day 0 पर जब order आता है आज 29th April को day 0. तो मैं 7th day को उसके पास जाऊंगा ये पूछने के लिए are there any issues depending on the consumption cycle of your raw material. तो मान लीजिए आप दाना बेच रहे हो और उससे प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस से वो एक काम बना रहा है. तो आपको क्या पता करना है
आपको ये पता करना है कि इस रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करने में उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम हो रही है. Yes or no? Here the feedback is there. Now, what is the objective of this step? Check up with the customer if the consignment has been received and when do they intend to use it, and fix date and time of visit accordingly. Are you with me? Yeah. तो अगर उनकी कन्वर्जन साइकिल 7 दिन की है, तो आप अपनी विजिट भी तभी करो ना जब आपका प्रोडक्ट यूज हो चुका हो, ताकि आपको फीडबैक मिल जाए. पहले फीडबैक मांग करके करोगे क्या? वो आपको, आप वहां तक पहुंच गए और उसने कह दिया कि आप 7 दिन बाद आना, भी तो आपका कंसाइनमेंट पहुंचा है. ये एक सिस्टम है. नंबर 3, meet operations people of customer organization to check if they have any issues. Hello. Yes. I'm writing. I'm making notes. Most of the time, what we do is that we talk to the purchase guy and come back. Correct. And like an idiot, the person may not have any clue on the application of that product or service. Right. Now, you may get hurt if I'm using a word like this if you are a purchase manager, so my apologies for that. But there are times when people buy screws, and the people who are purchase officers, they buy screws and think that everything is like that. Everything in this world is like that. Because उनके दिमाग में टारगेट क्या है? खाली प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी को कम करना, क्योंकि वही मैंडेट मिला होता है. वो एप्लीकेशन से उनका कोई मतलब नहीं है. इसलिए यूजर डिपार्टमेंट से फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी. नंबर 4, अगर आपके प्रोडक्ट को यूज करने का कोई तरीका है कि ऐसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उसकी एप्लीकेशन की आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अगर आप ऐसे यूज करेंगे मेरा रॉ मटेरियल तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आपकी एक कार 15 का भी एवरेज दे सकती है और 10 का भी एवरेज दे सकती है. आइडियली एक ऑयल कंपनी को क्या करना चाहिए? उनको एजुकेशन कैंपेन चलाने चाहिए इस बात के लिए कि कैसे आपकी पेट्रोल की लाइफ बढ़ सकती है. यस और नो? राइट. यस. आज इसलिए ऐसा नहीं करते हैं. बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज करती हैं. अगर आप गुड़गांव में आओगे तो मारुति का आपको अवेयरनेस स्कूल मिलेगा, जहां पर वो ड्राइविंग सिखाने से लेकर सब कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन तक. तो आप अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ट्रेनिंग जरूर करें. ठीक है? एंड देन ensure that you map the entire account, which means if there are stakeholder A, stakeholder B, and stakeholder C, then when you are visiting already, then ensure that you understand who are the stakeholders and meet all of them. What will that lead to? You will get a 360-degree view rather than only meeting the purchase guy, because next time that same guy would be able to give you a better size and wallet share also. आपके मन में ये आ सकता है कि मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और इतनी सारी मैं विजिट की बात कर रहा हूँ या कॉल की बात कर रहा हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा लॉजिक के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा. इतना पर्सनलाइज आंसर मेरे को करना थोड़ा सा मुश्किल है. अगर आपको 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको शायद SMS से काम चलाना पड़ेगा, बट अगर आपका 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो हो सकता है आप विजिट अफोर्ड कर सकते हैं. उस बात को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिमोनियल एट एन एप्रोप्रिएट टाइम. Which means, let's say you have got 10 customers and they are happy with your product and services. So you need to have a system where you can request for email testimonial, or you can use your smartphone for recording customer's voice after seeking his or her permission, and do it only after 2 or 3 lots have been supplied and we know that the customer is happy. Are you with me? Yeah. Because if you try to, let's say मैं धैर्य आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ना करूं और वैल्यू ऐड करने से पहले माल बेचने की कोशिश करूं, तो शायद आपका जो सिस्टम है ना वो ट्रिगर हो जाएगा और आप मेरे को धक्का दोगे पीछे एज अ सेल्स पर्सन, बिकॉज ये नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ह्यूमन बीइंग. तो आप टेस्टिमोनियल तब मांगिए जब आपका फीडबैक आ चुका हो, आपको पता है दैट द कस्टमर इज हैप्पी. द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन आस्क फॉर रेफरल्स at the right time when the customer is happy. Okay, apart from testimonials. So do it only after 2 or 3 lots have been supplied and we know that the customer is happy. Okay. Also, if your organization has the bandwidth, muscle power, and the right intention to be in the business, and you are not a fly-by-night operator,
which I think because you are asking that question, you are not, then in that case, मतलब मैं वो वाली कंपनी को एडवाइस नहीं देता हूँ इस तरीके की जो सिर्फ फेसबुक पेज पे चलती है, ठीक है, आजकल तो वो भी चलती है ना। तो अगर आपको रहना है बिजनेस के अंदर, तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिएगा कि रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। So personal courtesies like wishing on birthdays and anniversaries, or when there is a significant happy event in stakeholders family, you should have a customer relationship management software where you need to note down these details. Yes or no? Are you there? Yes, I'm here. You can note down all these details of each stakeholder in customer organization, and a phone call is better than a text message. Yes. Latter is slightly impersonal. तो आजकल बहुत चलन चल गया है कि हैप्पी बर्थडे का भी ऑटोमेटेड आ जाता है और वो भेज देते हैं लोगों को लिंक्डइन पर, ना नाम पता है ना पहचान है, तो इम्पर्सनल है ना, कोई फायदा नहीं है उससे। आप उस तरीके की एक्टिविटी करके अपना टाइम वेस्ट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउट ऑफ द 9 steps, प्लीज do not shy away from meeting top management officials of customer organization. Meeting whom? Sorry. So do not shy away from meeting top management officials of the customer organization. Why? Okay. Assuming, let me explain by giving an example. Let's say, take for example, I am working with Vikas, and Vikas is, let's say, the purchase manager, okay, or let's say the utility manager or the maintenance manager. Yeah. And you know that there are 2 CEOs and 1 director running the company. तो जब आप विजिट करते हो और आपने स्टेक होल्डर मैपिंग ठीक से कर रखी है, तो आप अपना एक पैकेज बनाकर कम्युनिकेशन का भेज सकते हैं ऑन हाउ योर रॉ मटेरियल इज हेल्पिंग देम इन अचीविंग देयर प्रोडक्टिविटी। इफ यू कैन क्रिएट अ न्यूज़लेटर, इफ यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, इफ यू कैन क्रिएट अ टेस्टिमोनियल, इफ यू कैन क्रिएट अ वीडियो which is a solid proof that you have helped the organization, and you are not shying away from telling to the management of the customer's organization, I feel if you will do all these 9 steps, that will help you to evolve relationship. And at the base of it, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर दे रहा हूँ आखिरी वाली बात में, you should have the heart at the right place. Right. Because अगर खाली दिखावे के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि मैं चाय पे चर्चा कर रहा हूँ तो अगले दिन दूसरे कोचेस चाय पे चर्चा शुरू कर देते हैं, है ना। करिए, बहुत अच्छी बात है, किसी को भी कॉपी करिए, हमने भी किसी से सीखा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन इंटेंट साफ रखिए। आप घर में भले ही यूरेका फोर्ब्स चलाएं दिवाली पर, लेकिन हर मीटिंग से पहले, हर कॉन्वर्सेशन से पहले अपना दिल साफ करके दें। एंड योर इंटेंट इज टू ऐड वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज वन डे माय डियर फ्रेंड, people will not remember numbers. Yeah. People will only remember if you have added value in their life. During COVID times, I went to certain places at people who had died. It was difficult to find 4 people. One is the fear side of it. Second is also a reflection of the kind of engagement that you have done in your life. I'm not talking about unfortunate incidences right now, where it was not possible for a person to manage. I'm talking about where there were people, but they decided not to come. Yeah. My realization is very personal, that if you have the heart at the right place, the mind at the right place, and you have got the vision right, then there should not be any human being who should be stopping you to build relationship. And one of the quality attributes for any human being is developing proactive networking skills. I have seen people who go in exhibitions, my dear friend Daria, they carry 100 cards, और जब एग्जीबिशन खत्म हो जाती है तो उनके पास 90 बचे हुए होते हैं जेब के अंदर। तो ईगो में अगर रहना है तो बैठो घर के अंदर, ठीक है, that's not the arena that you should be in. बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, मैं वेबिनार करता हूँ, 500 लोग आते हैं, ठीक है, 50 लोग फनल के अंदर आते हैं, 5 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, या 10 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, या 25 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसमें कोई, if the intent is to add value into the human being's life, you will eventually get business. If the mind share is there, wallet share will be an outcome automatically. Don't worry on that. सेवा करे जाओ, बंद मुट्ठी से काम मत करना।
अदरवाइज सदर बाजार में ट्रेडर बन सकते हो जिसका कोई लेना देना नहीं है, इधर से आया माल इधर से चला गया. दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना है, सिर्फ पैसे कमाने हैं. मैं एक ब्रोकर हूँ तो इधर से माल लेता हूँ उधर देता हूँ, कोई वैल्यू एड नहीं करनी. ठीक है, बट द स्ट्रेटजी शुड बी क्लियर. There are detailed answer, 9 steps. Wish you all the best that you are able to influence your customers' relationship process. Thank you so much, sir. I can take, let's say, last 3 questions, Utkarsh. I think Anand sir is raising his hand. Anand Chokshi sir. Please go ahead. Yeah. Sir, good evening. I was patiently hearing whatever your advices were there. I am from a middle management. I am an employee and heading 70 people's team as currently. But little things which I wanted to learn from you. That though I am a democratic kind of a leader, but what exactly, according to you, is the right kind of a blend for exhibiting leadership while dealing with the people? Because nowadays dealing with people is becoming very cumbersome process. So, मैंने ना मतलब थोड़ा चाय पे चर्चा है तो इसलिए थोड़ा सा आई एम जस्ट टेकिंग द लिबर्टी ऑफ शेयरिंग दिस. मैंने आज अभी इस चाय पे चर्चा से ठीक पहले लिंक्डइन पर एक आंसर लिखा कि अगर हर वक्त 46 डिग्रीज सेंटीग्रेड के कॉन्वर्सेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ करते रहोगे तो लाइफ में कोई भी याद नहीं रखेगा. एक लीडर में लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? A leader is a person whom people choose to follow to a place where they would not go by themselves. I'm repeating. A leader is a person whom people choose to follow to a place where they would not go by themselves. Yes or no? True. Very true. Now, this is a subject which requires very, very deep inquiry. And most of the times, it would boil down to some very fundamental behaviors. Every leader will share from his or her own experience. I would share with you a story of Nelson Mandela here. Okay, Nelson Mandela is one of the few leaders who is non-controversial, I would say. True. Because if you travel to different parts of the world, people will have some people talking about them in favor and some people against them. Okay. And somebody asked Nelson Mandela that you are a great leader. You are regarded as one of the best leaders. Where have you learned from and what are the couple of tips that you would like to share? So he gave a beautiful answer. He said, I learned it from my father, who was a tribal leader. He was a tribal chief. He was the head of the tribe. And whenever he used to do meetings, he used to form a circle and do meetings. Anant, are you there? Yeah. So he used to form a circle and then do the meetings. And when I asked my father, why do you do that? His answer was that every human being is equal. That's rule number 1. Anant, you can unmute yourself. You are on mute, Anant. I'm with you. So, one, he said that he used to sit in a circle and I'm with you. And allow the people, because he used to consider them as equal. कोई बड़ा और छोटा नहीं है, पहली बात. Right. That itself is a very difficult trait to develop. हम बचपन से इतना ज्यादा फर्क देखते आ रहे हैं कि building an ability to talk to an elderly person and to a child, building an ability to be culturally agnostic, various religions, इतने ज्यादा डिवीजन हमारे दिमाग में कर दिए गए हैं कि बड़ा मुश्किल है ये क्वालिटी डेवलप करना. तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि आप ये डेवलप करिए कि सब बराबर है. And second important aspect which Nelson Mandela shared, which I would like to highlight to the entire audience, is he said something very powerful. He said that my father was the last person to speak. Right. So he used to ask questions, listen to everyone's opinion, and one of the famous authors, Simon Sinek,
has also quoted in one of the videos the same story that I'm sharing with you. And he said, he topped it up with a very beautiful answer once again. He said that listening has been regarded as one of the most important skills for a leader. However, being the last person to speak is far more important. True. True. So that you are able to gather. Leadership is a deep subject, Anand. Most of the times it would require an inquiry within. And whosoever you regard as a great leader, ask yourself a question on who do you really want to be, and then start acting accordingly. Because the frames, the idols might be difficult to replicate. You may get influenced by them, but decide your own charter, decide your own course, decide your own path, and walk in Right. yeah. So that's my answer, Anand, to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're most welcome, Anand. So this was Anand. Any other question? I can take one last question, Utkarsh. Monish, you want to ask something? Monish Walekar? I think Monish is... Hello, आ रहा है सर आवाज? हाँ, आपका आ रहा है आवाज, मोनिश, प्लीज। मोनिश, आपने अपने आप को ना म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करेंगे तो आवाज आए। अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो मेरा अभी बाजनी का चकली का प्रोडक्ट है, तो मुझे सेल्स टीम बनाने की है, उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। उत्कर्ष, क्या आप समझ पाए क्या क्वेश्चन है, किस चीज का काम है इनका? Sir, actually, Monish sir is wanting to understand that how he should be building up a sales team, how he should be hiring a sales team. Monish sir, can you help us with a little background about your business? फूड में मेरा बाजनी का चकली बनाते हैं, मतलब हम फरसान में जो आते हैं ना, बाजनी का चकली आता है, ट्रेडिशनल इंडियन बाजनी का चकली। I think you may have to repeat it again, sir. बाजनी का आपकी ना एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली शायद आप ट्रैवल करते करते कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी आवाज कट रही है मोनिश, बट मैं कोशिश करता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ। हम अनफॉर्चुनेटली पूरी बात नहीं समझ पाए, तो हो सकता है what I share might not be landing well with him, but हेलो, आ रहा है क्या सर आवाज? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ सर, मेरा बाजनी का चकली का प्रोडक्ट है मेरा, तो उसके लिए मुझे अभी वो सेल्स टीम बनाने के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है बहुत, उसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। देखिए, ऐसा प्रोडक्ट है कि गाड़ी पे जा रहा हूँ मैं हेडफोन लगा के। आप देख पा रहे हो क्या उत्कर्ष कि किस चीज का प्रोडक्ट है? चकली बाजनी का चकली। I think there is a product. It is a product which सर चकली है, चकली खाने वाली बाजरे की चकली है। बाजरी। तो आप कैसे सेल कर रहे हो मोनिश? आप सड़क पर सेल कर रहे हो क्या? शॉप टू शॉप में अड़सर जा रहा हूँ वीडियो देने के लिए। नहीं, तो आपका जो चैनल है, कस्टमर तक कैसे पहुंचते हो? आप डायरेक्ट पहुंचते हो, आप चैनल पार्टनर के थ्रू पहुंच रहे हो, आप होरेका का थ्रू पहुंच रहे हो, आप रेस्टोरेंट्स में सप्लाई कर रहे हो, आप छोटे वेंडर्स को सप्लाई कर रहे हो? कौन है आपका टारगेट ऑडियंस? हम शॉप पे देते हैं, शॉप वाले से कस्टमर लेके जाते हैं। और कोई एग्जांपल दो, शॉप ओनर का क्या मेन बिजनेस है, वो क्या करता होगा, कहाँ पर ये चकली मतलब स्वीट चाय की दुकानों पर वहाँ नहीं, स्वीट मार्ट रहते हैं और अपना फरसान के दुकान रहते हैं, नमकीन के, वो दुकान में रहते हैं, और वो उनके पास वो सब बेचते, फरसान, केला, वेफर्स वगैरह, और ये भी रहते हैं, मतलब ना कैसे उनका रहता है, उसके साथ वो भी बेचते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट बिजनेस क्या है ना, हमारा टारगेट क्लाइंट क्या है। जो भी व्यक्ति उसको परफॉर्म कर सकता है, देखिए टिपिकल एफएमसीजी बिजनेस है जहां पर रेगुलर जर्नी प्लान, रेगुलर बीट प्लान पर लोगों को जाना पड़ेगा, है ना। तो जो सिमिलर बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो
रेगुलर उन दुकानों पर सप्लाई कर रहे हैं, वहां से आप अपनी हंटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आपका प्रोडक्ट टेक्निकल नहीं है, मतलब कोई 27 टेक्निकल फीचर नहीं है उसके अंदर। उसका एक प्रोडक्ट है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसका एक रॉ मटेरियल है और उसका एक प्राइस है। मैं ये भी समझ पा रहा हूं आपके शॉप, आपका जो प्रोडक्ट अभी आपने वीडियो में मेरे को दिखाया कि आपका भी कोई ब्रांडिंग भी नहीं है उसका। नहीं है ना, ब्रांडिंग में है ना। ब्रांडिंग में क्या किया है आपने? दिखाता हूँ, पैकिंग वगैरह सब किया है अपन ने। हाँ नहीं, आप अब क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को हमने रोक रखा है तो अभी हम वीडियो नहीं देखते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मेरा मतलब जब ब्रांडिंग से था तो सिर्फ स्टिकर लगाने से या पैकिंग से नहीं था। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि क्या हमने ब्रांडिंग एक्सरसाइज, हाँ मैंने देखा तो क्या हमने ब्रांडिंग एक्सरसाइज करी है जिससे ये फुल क्रिएट हो। पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहाँ पर हैं, कौन से शहर में? पुणे में। पुणे में। तो उत्कर्ष, आप पहले तो मोनीश भाई का नंबर ले लीजिएगा और चैट बॉक्स में ले लीजिएगा और इनके बनाया हुआ प्रोडक्ट पहले ऑर्डर कर दीजिए। पहले मेरी तरफ से आप ऑफिस में गिफ्ट कर दीजिए पुणे, ठीक है? buy them and start using that product or service. Now about hiring, तो मैं ये कह रहा था आपसे मोनीश भाई कि क्योंकि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, अभी कितना टर्नओवर है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलेगा। देखिए, मैं इनसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम पहला आदमी हायर तब कर। कितना टर्नओवर है आपका मोनीश भाई? बहुत ही ज्यादा कट के आ रहा है। तो 3 लाख महीने का है। 3 लाख रुपए महीने का है ना? तो आपको अभी कितने लोगों की जरूरत है? आपने कैसे कैलकुलेट किया? हाउ हैव यू अराइव्ड कि आपका स्ट्रक्चर कितना होगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम पहला आदमी, एक ओनर पहला आदमी तब हायर करता है जब वो काम खुद नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको किस चीज के लिए जरूरत है? मुझे क्या करने का, ऑर्डर लाने की दुकान में से, इसके लिए मुझे दुकान में ऑर्डर लेने जाने वाला लड़का चाहिए, है ना? और डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, मतलब नहीं क्या, माल लाने के लिए। दो तरीके के लोगों को मोनीश भाई आप हायर कर सकते हैं। पहला, आप किसी फ्रेशर को हायर कर सकते हैं, जो व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ना हो, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की शॉप में जाने के लिए कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट ग्रेजुएट के पास कोई, अभी आपने ऐसा कोई कारण नहीं जनरेट किया कि आपकी कंपनी वो ज्वाइन करे। हर बिजनेस की एक लाइफ साइकिल है ना, और आजकल पुणे में बच्चों के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है ना? तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, आप जिस ट्रेड में हैं उसके एलाइड ट्रेड के जो लोग हैं, उसके एलाइड ट्रेड के लोग जो उन दुकानों पर ऑलरेडी किसी और प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जा रहे हैं, उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा, ताकि वो आपको यूज्ड एक्सपीरियंस के साथ आ सके। पहली बात। तीसरी बात, ये तो बातें थी कि कहां से मिल सकते हैं। तीसरा ये है कि आज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टिल एग्जिट अपने पूरे प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इंसान हायर नहीं कर रहे हैं। पीपल डू नॉट लीव जॉब्स ओनली फॉर मनी. People also leave jobs because they did not get the dignity which was required, which was expected. अब कारण तो 200 हो सकते हैं। डिग्निटी चाहिए हर इंसान को। आज मेरे घर में अगर कोई ड्राइवर काम कर रहा है या केयर टेकर काम कर रहा है, तो वो शायद लंबे समय पर मेरे पास इसलिए टिका हुआ है क्योंकि मैं ठीक से बात करता हूं। और कम लेवल के या छोटे लेवल के या स्टार्टिंग करियर में ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अपना जो ड्राइवर है ना, उसके सैलरी के साथ उसको गैस का सिलेंडर देते हैं। तो ये जानना कि उस रोल के लिए क्या जरूरी है, आप किताबें पढ़कर, जो कॉर्पोरेट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस काम करता है, वो शायद आपके लिए एप्लीकेबल ना हो।
So do not get inspired by books which are found at the airport. आपको उस प्रोफाइल को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा मोनीश भाई, और स्टार्ट टू एंड उस प्रोसेस को देखना पड़ेगा किस तरीके के लोग यहाँ पर लंबे समय के लिए टिक पाएंगे और उनके क्या कारण है पर्सनल और प्रोफेशनल की वो आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। कई बार कारण ये हो सकता है कि मैं पुणे में ही काम करना चाहता हूँ और इसी एरिया में काम करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है। कई बार मैं ये कारण इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं तो मेरे को अच्छे पढ़े वाले लिखे वाली जगहों पर नौकरी नहीं मिलती। कई बार हो सकता है आपकी कंपनी है और वो किसी डीलर में काम करता है, डीलर से कंपनी के पेरोल पे आना चाहता है। तो वो क्या कारण है जो आपकी ऑडियंस को एक्साइट करेगा, उस कारण को समझना और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है कि उत्कर्ष से मैं कहूंगा कि आपसे बात करें और मेरे लिए भाई चक्री मंगा देना, और जब मैं नेक्स्ट टाइम पुणे में आऊं तो मेरे लिए चक्री यहीं से मंगाई। ठीक है, मैंने आपकी तो मार्केटिंग करी दी है ताकि आपके आने का वक्त तो यूटिलाइज हो ही सके मोनीश भाई। ठीक है, यू हैव गॉट अ लवली स्माइल, यू आस्क दिस क्वेश्चन व्हिच मींस योर हार्ट एंड माइंड इज एट द राइट प्लेस, you also want to develop team and not do it yourself is a very good indication that your business will grow. If your product quality is good and you know who is your target audience, ये छोटे छोटे बातें हैं जो सॉल्व होंगी। आपके लिए मेरे पास 5 एडवाइस हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लोगों को हायर कर लेने के बाद नॉलेज देनी है, स्किल देनी है, मोटिवेशन देना है, रिसोर्सेज देने हैं और डायरेक्शन देना है। क्योंकि हायर करना तो सिर्फ एक बात है, ऐसी सवारी वाली बस मत बना देना कि हर स्टॉप पे उतरती रहें। तो इन 5 बातों का ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ हायरिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, देन इंश्योरिंग दैट दे परफॉर्म आल्सो इज अनदर पार्ट एंड कीप ऑन कमिंग। ये जो हमारे सेशंस होते हैं इनमें लगातार आप आते रहिए और धीरे धीरे करके अपने सवाल पूछते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर ये आवाज ऐसी जगहों पर भी पहुंचने लगी है कि जो लोग आपके लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, hats off. India is really changing. God bless you. I am there to support you. कोई भी चीज आपके मन में आए आप उत्कर्ष से संपर्क बनाए रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। He certainly needs an applaud. Absolutely for asking that question. उत्कर्ष 5:15 हो गया है। कर्टेसी ये कहती है कि सी ऑफ करने से पहले कहते हैं ना, वो पार्टीज में कहते हैं 1 फॉर द रोड। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चाय पे चर्चा। Sir, there is a question in a Q&A box that a person wants to understand about Mr. Manpreet Singh wants to understand about that what is sales growth journey all about? सेल्स ग्रोथ जर्नी क्या है ये? तो जैसा नाम है, any human being who would like to understand one of the most powerful skills which will be utilized across industries, across roles, is I firmly believe that people need to understand what sales is all about. Okay? If any one of you who is listening to me right now have the following challenges. Step number 1. अगर आपके पास ये चैलेंज है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि सुबह से शाम तक दिन आपका कैसे निकल जाता है, then you are invited to join sales magnet program. अगर आपको ये नहीं पता कि मैं क्या एंट्री स्ट्रेटजी बनाऊं जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकूं और लीड्स मेरे पास अपने आप चलकर, जॉइन सेल्स मैग्नेट प्रोग्राम। अगर आप कॉन्टैक्ट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक अपनी कंपनी का प्रोसेस लिखना चाहते हैं ताकि उस प्रोसेस और सिस्टम्स के हिसाब से काम कर सकें, देन सेल्स मैग्नेट और सेल्स ग्रोथ जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि लोगों को हायर कैसे करना है, जैसा अभी मोनीश ने पूछा, तो प्लीज ज्वाइन द सेल्स मैग्नेट प्रोग्राम। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं क्लाइंट्स के साथ ताकि आपके पास बिजनेस आता रहे, कैसे रेफरल लिया जाता है, कैसे टेस्टिमोनियल लिया जाता है, ज्वाइन सेल्स मैग्नेट प्रोग्राम। I feel that why am I calling this a journey? Because I feel that training is a process. It is not an event.
Yes or no? Now, if it is a learning process, then it can't have a start date and end date only. मेरा बेटा अगर piano classes attend करता है, so he can't do a 2-month course and say that I am a piano specialist. ठीक है, तो sales is like that. Your customers are evolving, your client side is evolving, their challenges are evolving. You need to evolve yourself. So अभी हमने क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो 10 दिन का प्रोग्राम है, जहां पर ये गाइडेंस दी जाती है. 20 आवर्स का ये प्रोग्राम है. जैसे ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेते हो 10 दिन में, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलता है ये प्रोग्राम. अभी तक हम लोग 30 बैचेस कर चुके हैं. हम 31st बैच लॉन्च करने जा रहे हैं. उस प्रोग्राम को अटेंड कर लेने के बाद आप एक क्लब मेंबरशिप पाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्स ग्रोथ कम्युनिटी. और उस सेल्स ग्रोथ कम्युनिटी में आ जाने के बाद आपके पास एक्सेस है एक प्राइवेट कम्युनिटी का, जहां पर आप हर वीक 7 to 8 मेरे साथ कंटिन्यूअसली चाय पे चर्चा कर सकते हैं. और आपको एक नए टॉपिक पर जानने का सवाल पूछने का मौका मिलता है. तो लाइफ लॉन्ग कोचिंग और 20 आवर्स का प्रोग्राम, जहां पर ये सेल्स के ऊपर गाइडेंस मिलती है. क्योंकि मेरा मानना यह है कि पढ़ लिया, उसके बाद करने में भी तो चैलेंज आएगा. और जब कर रहे होगे तो पूछोगे किससे? 90% टाइम तो ट्रेनर का नाम नहीं याद रहता जिसका कोर्स हमने अटेंड किया. तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार है तो ये वो प्रोग्राम है. इसीलिए उसका नाम जर्नी रखा है. ये तब तक चलेगा लाइव जब तक मेरी सांस चल रही है, और जब मैं फिजिकली अनफिट हो जाऊंगा तब वीडियोस चलेंगे. ठीक है, तो अब ये बंद होने वाला नहीं है. मैंने इसको मिशन की तरीके से बना लिया है that till the time I serve at least 10,000 people, I will continue to serve, and then after 10,000 people are covered, then we will find another exciting mission for life. I want to create 10,000 sales magnets, and I want to help MSME owners whose business is stagnant, who wants to scale up their business by providing them a step-by-step sales growth blueprint. And that's what is covered in the sales growth journey. Rajveer, इस प्रोग्राम में हम लोग 10 से 15 लोग लेते हैं एक बैच के अंदर, राजवीर. और इसकी फीस ऑलरेडी लिखी हुई है 9,999 रुपए. लाइफ टाइम कोचिंग के 9,999 रुपए. तो 10 दिन का प्रोग्राम मिलेगा आपको लाइव 20 आवर्स का, और लाइफ लॉन्ग आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा हर संडे को 7 to 8 AM. लाइफ लॉन्ग मतलब मेरी लाइफ के हिसाब से. उसके बाद फिर वो अगर मैं फिजिकली फिट नहीं रहा तो उसके बाद ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. 2 साल से लोग जो बैच नंबर 1 में, या 1.5 साल पहले जो लोग बैच नंबर 1 में आए थे, वो आज भी अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो 10 डेज का ट्रेनिंग, 20 आवर्स का ट्रेनिंग, और एक और चीज फ्री गिफ्ट है. आपको 1 घंटा मेरे से पर्सनली बात करने का भी मौका मिलेगा, ताकि मैं आपकी स्टोरी सुन सकूं, ताकि मैं सही गाइडेंस आपको दे सकूं आपके बिजनेस के हिसाब से. उसके अलावा आपको 39 लर्निंग वीडियोस भी मिलेंगे. उसके अलावा आपको 10 टूल भी मिलेंगे. उसके अलावा एक 26 पॉइंट की चेकलिस्ट मिलेगी, स्टार्ट टू एंड क्या क्या करना है आपको, और लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी सेल्स ग्रोथ कम्युनिटी की. तो ये सारी चीजें 9,999 रुपए में अवेलेबल है. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग गाइडेंस एंड फाउंड दिस चाय पे चर्चा valuable, only those people who found it valuable, you may intend to join this program. If you didn't find it valuable, we had a lovely cup of tea with each other, a lovely conversation with each other. Sir, but one last question, which is from my side for everybody's understanding, that according to you, who is this program for? So मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? आइडियली जब मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था उत्कर्ष, तो क्रिएट किया था एमएसएमई ओनर्स के, जो बिजनेस ओनर्स. उसके बाद सेकंड वो लोग थे जो उनकी कंपनी में इम्प्लीमेंटर्स. तो मान लीजिए आपका सेल्स डायरेक्टर है, आपका मार्केटिंग डायरेक्टर है, आपके सेल्स हेड्स है. लेकिन आई एम सरप्राइज्ड दैट सिंस सेल्स इज अ स्किल व्हिच इज यूज्ड फॉर in every conversation. Right now, what are we doing? We are selling, right? While you are persuading your own team member, also you are selling. So, अगर मैं broad range देखूं, generic range देखूं, तो मेरे प्रोग्राम में आर्किटेक्ट्स ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है. जो टिपिकल अगर आप देखोगे, या एक टेक्निकल प्रोडक्शन मैनेजर ने ज्वाइन किया है, या प्लांट मैनेजर ने ज्वाइन किया. अब अगर आप टिपिकल ऑडियंस के हिसाब से देखो तो वो एनविसाज नहीं किया था, लेकिन दे हैव डन वंडर्स इन देयर प्रोफेशन. They have utilized full value of the program.
and I'm also seeing that those people who have attended that program are changing. मेरा मानना ये है कि ये तो एक ऐसी स्किल है उत्कर्ष जो स्कूल कॉलेज तक भी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेल्स समझ में नहीं आया ना तो यू विल नॉट बी, बिकॉज किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. यू शुड नो व्हेन टू शेयर and you should know when to ask to persuade people, and both the skills are very extensively covered in this program. I firmly believe that if you don't know this, you are really missing a large pie of your life. हर चीज में जरूरत है सेल्स की. I hope I have answered your question. Yes. Yeah. जो लोग straight अपने business growth के लिए आना चाहते हैं उनके लिए तो natural choice है. I feel that at this price of 9,999, if you are getting lifetime support, if I would have been an audience, I'm not saying because I have created this program, I would have enrolled myself. Why? Because ना सिर्फ पढ़ने का मौका मिलेगा, but implementation support भी मिलेगा, जो usually बड़ा मुश्किल होता है, और दोनों लोगों के लिए मुश्किल होता है, learners के लिए भी और पढ़ाने वाले. All right. That's it. Yeah. All right. Thank you. Thank you so much for coming. Hello. I think Amol Patil sir has something to ask. My question is, who will be taking the charge, or something we can say, who will ये कौन पीछे रहेगा हमारे जब आपका complete 20 hours journey will completed, then who will with us, who मतलब कौन हमारे साथ रहेगा, एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे या व्हाटएवर? साथ रहेगा बोले तो क्या अपेक्षा है? नॉर्मली जब कि और भी ट्रेनिंग्स हमने ली है तो पूरा सेशन में मैंने देखा कि आफ्टर सेल्स और आफ्टर जब प्रोडक्ट कोई लेने के बाद कस्टमर रिक्वायर्ड इज कि वो जो प्रोडक्ट है उसको सर्विस चाहिए, एज लाइक सेल्स मास्टरी या कोर्स किया तो उसके बाद जो भी आपने लिखा के दिया या जो भी पढ़ा है तो वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कौन रहेगा? या मतलब ये मेरा क्वेश्चन सिंपल है शायद. मतलब स्कूल में जाता है तो होमवर्क किया है या नहीं किया है, तो ये कैसे, ये कौन देखेगा? Maybe I'm start my video. Yes. Yeah. So can I check my understanding first? Yes. Okay. So if my son is going to attend taekwondo classes, okay, and he goes thrice a week, what should be my expectation from the school? कि वो अच्छा पढ़ रहा होगा. ठीक है. And do you feel that learning is a one-way process or a two-way? No, it's a two-way process. That's why I'm asking. Correct. And if it is a two-way process, you will also agree with me that it is a joint responsibility. Correct. Yes or no? Yes. And when we say a joint responsibility, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मेरा वापस आता है घर पर और वो ये कहता है कि सर जो है वो बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, है ना, पहला सिचुएशन. यस. तो करेक्टिव मेजर एज अ पेरेंट क्या लेना चाहिए? कि वो चेक करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए. यस. और हो सकता है सर ये एश्योरेंस दे रहे हो कि अगर मजा ना आए या वैल्यू ना मिले तो पैसे वापस कर देंगे. नहीं, ऐसी तो बात नहीं है. नहीं, हो सकता है वो हो सकता है. बराबर. ऐसा हम करते हैं. ऐसा हम करते हैं. नहीं, आई एम नॉट जस्ट लेट मी आंसर वन बाय वन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोग दिमाग में रखते हैं. मेरा मानना ये है कि लर्निंग इज इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ आई वांट टू लर्न, then I have 4 faculties with me. One is called observation, second is called reflection, third is called meditation, and fourth is called contemplation. Contemplation. मतलब यानी जब पढ़ाया जाए
और मैं मान लीजिए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने टीचर, गुरु, मेंटोर की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। करेक्ट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर नहीं ले सकता। करेक्ट। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो एक घर में 2 बच्चे एक से निकलते। और जिन 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 बच्चों के माँ बाप पीएचडी करे हुए हैं या बहुत हाईली क्वालिफाइड है, उनके घर के बच्चे भी PhD। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आप ऑब्जर्व करें कोई भी चीज को, तो ऑब्जर्वेशन की स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज करें, विच मीन्स हम अपने नोट्स बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे अपने पार्टिसिपेंट्स को हैंड होल्ड कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं। हम पहले 10 दिन पढ़ाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को ये मौका देते हैं कि हर संडे को 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपने सवाल पूछ सकता है, 1 घंटा। तो जिन लोगों ने 2 साल पहले बैच नंबर 1 ज्वाइन किया था, पे तो उन्होंने भी उतना ही किया था, 9,999। उनको 2 सालों में मान लीजिए 104 अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी। मान लो वो पढ़ने के बाद आए ही ना, तो हम फॉलो अप नहीं करते। ओके। हम व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं कि ये सेशन है, लेकिन अगर अमोल पाटिल नहीं आ रहा है तो हम फोन करके नहीं पूछेंगे कि स्टूडेंट तुम क्यों नहीं आए थे। ऐसा स्कूल 9,999 रुपए में नहीं चला सकते, क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन लगातार जो एग्जीक्यूटिव टीम है, उत्कर्ष अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दीक्षा है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, वो लगातार रिमाइंड करते रहते हैं आपको। वेरियस अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम के, बट हमारे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर पार्टनर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स। करना क्या है, हमें एक स्टूडेंट कम्युनिटी क्रिएट करनी है जो लर्नर्स की कम्युनिटी हो। और अमोल, मैं इस बात को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि दुनिया में हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से only 10% people have a learner's mindset, which means out of 100 people, only 10 people are those people who will learn on their own. Rest people learn when they have to learn. यानी एग्जाम के वक्त मान लीजिए कोई मजबूरी आ गई, मान लीजिए कोई वजह आ गई जिसकी वजह से जॉब में रिक्वायरमेंट आने लगी, तब पढ़ते हैं। अदरवाइज only 10% people are self learners. So what we will not do, or what we will not promise, is that we will not reach out to people and go after them that they should learn, but we will provide opportunities in the school that they can continuously learn. That's how we support our students for lifetime. And third thing is, there is a common WhatsApp group of the batch where people continuously keep on asking questions. So these are the 3 services that you are getting in 9,999. A 20-hour program, a 1-hour conversation, and lifetime opportunities of 1 topic every week, every Sunday, and an opportunity to ask a few questions. Yeah. Okay. That is only. But normally, I took 2 to 3 trainers training. क्या होता है कि जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो वहां पे जो तकलीफें आती है, तो वो सॉल्व करने के लिए आपका एक पॉइंट अच्छा लगा कि इन अ वीक वी कैन मीट एंड आस्क द क्वेश्चन. इट इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू अस. ये इसके पहले कहीं नहीं था कि ट्रेनिंग हो गया, जो 7 पिलर्स है वो सिखा दिए, अभी तुम्हारा देख लो. तो ये एक ठीक है कि एटलीस्ट इन अ वीक वी कैन मीट एंड आस्क समथिंग, जो भी प्रॉब्लम्स है. ठीक है सर, अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. और इसके बाद के भी अपॉर्चुनिटी है, बट वो 9,999 रुपए में. हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जहां पर हम अपना समय लगाते हैं और करके दिखाते हैं, या पार्टनरशिप करते हैं क्लाइंट्स के साथ. कि हम आपके साथ और ज्यादा एंगेज होंगे, लेकिन वो इसमें अवेलेबल नहीं है. कई बार लोग ये लेते हैं, कई बार लोग एडवाइजरी कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कई बार पर्सनल कोच हायर करते हैं, कई बार पर्सनल कोचेस हायर करते हैं,
कई बार प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर देते हैं स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप को। तो डिपेंडिंग ऑन क्या सोल्यूशन आपको चाहिए, मैं एक छोटी सी बात के अंत कहूंगा, प्रेस्क्रिप्शन विदाउट डायग्नोसिस इज मैल प्रैक्टिस। तो आपको कितना डोज की जरूरत है वो गैस अभी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टार्टिंग जर्नी इतनी सफिशिएंट है 10,000 रुपए में। आप अपने ही क्लाइंट्स को अगर आप खुद सर्विस देना चाहोगे ना, तो लाइफ टाइम सर्विस देना कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अल्टीमेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स अमेजिंग गट। जब मैंने ये लॉन्च किया था ना, तो लोगों ने ये कहा था कि बहुत मुश्किल है इसको कर पाना, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मुश्किल सफर के लिए निकले इस बार। अदरवाइज लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें, तो ये जितनी 1 घंटे की हमने कॉन्वर्सेशन करी है ना, वही शायद लाख रुपए से ऊपर की होती है। ठीक है, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इसमें सोशल एंगल भी है, क्योंकि जिन चीजों को सीखकर हमें फायदा हुआ, अब वो समय है, अब वो ताकत है, अब वो मसल पावर है, अब वो स्टेज पहुंच चुकी है लाइफ की कि अब हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी डीपर मीनिंग एसोसिएटेड है। और चौथा बहुत ही सिंपल है, मैं किसी के भी ऐसे पैसे नहीं लेना चाहता, किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा लगे कि उसको वैल्यू नहीं मिली। वजह क्या है? क्योंकि उस पैसे से कर्मा से घर की फीस और स्कूल की फीस बच्चे की जमा होती है, तो ऐसा ब्लड लाना नहीं है घर के अंदर। ठीक है, तो पैसे उससे लेंगे जहां पर उसको लगे कि वैल्यू है। अगर 3 दिन प्रोग्राम अटेंड कर लेने के बाद उसको लगता है कि वैल्यूएबल नहीं है, तो उसको नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी है, मैसेज कर दे और चला जाए। क्या दिक्कत? 9,999 रुपए के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करनी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आवर इंटेंशन, मैं ये मतलब सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारी इंटेंशन सही है। हम लोग सारे सीनियर पार्टनर्स अच्छे लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनके साथ आप अपने घर में बुलाकर ड्राइंग रूम में खाना खा सकते हैं। हम मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं है जिनकी मूछें नहीं आई हैं और वो कह रहे हैं 2 घंटे के प्रोग्राम में 10x कर देंगे। हमें बिजनेस चला, हम उन किताबों से पढ़कर नहीं आए हैं which are found in the books available at the airport. ठीक है, हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। हम सारे प्रैक्टिशनर्स हैं और बहुत ही हम्बली हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि आप एक्सपीरियंस करिए और उसके बाद बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, चाहे किसी का भी प्रोग्राम मेरा हो या कोई भी और सीनियर पार्टनर हो स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल। या ओके, most thank you sir, thank you very much. I have already crossed the limit, 5 मिनट ऊपर निकल चुका है, बट दैट्स व्हाट हैपेंस इन चाय पे चर्चा। सो मेरी चाय ठंडी भी हो चुकी है, खत्म भी हो चुकी है। आई होप यू आल्सो एंजॉयड दिस कप ऑफ टी। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड मे यू ऑल बिकम अ multi-million-dollar money magnet. God bless, दिल से आप लोगों को दुआ। and the day was made with Monish asking that question. God bless. Thank you sir, thank you so much joining in, Akshay sir. My team has already mentioned about details of the Sales Mastery upcoming batch, which is starting on 2nd of May. Participants who are looking forward to have a lifelong engagement with Dr. Akshay Seth can click on the link and save their seats right away. Thank you so much once again, Akshay sir. Thank you. Thank you so much, sir. The mentoring sessions for me, the last 10 days helped me how I should think, what steps should I take. Things are a bit clear in my mind. Our goal, we fixed our goal, but a structured way of approaching is sitting somewhere. So this program has enlightened me on that. I'm now confident. You fix up the goal and then find the ways. अभी ये मेरे समझ में आ गया कि that should be a structured way to go over there. बहुत अच्छा है, बहुत सारा सीख लिया कि जैसे फाइन ट्यूनिंग लाइफ को कैसा करना है। Sales was something, yes, I knew it a bit through this sessions or through this program. I got a direction not only in how to work in sales but in life. आपने सबसे बढ़िया सिखाया कि एक जेन्युइन सेल्स पर्सन कैसे चेंज कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है। सेल्स पर्सन को देखने का मेरे को मतलब नजरिया दिया।
Gurukul, outstanding. Vaccine, mentor, great. Booster dose, eye opener. Wealth creation factory. School, progressive handholding. Directive, life changer. Way to direction. Great support. Profound motivator. Inspiration, adventure. Catalyst, navigator. Development consultant. School of life. University for entrepreneurs. Growth catalyst. Dictionary of motivation. Mentor. Catalyst. Business trigger. Guide. Lighthouse.